avoid writing or replying in Urdu क्योंकि आपने पेपर इंग्लिश में देना है तो I will encourage and appreciate कि अगर आप we keep it more of a lecture in English, right? Okay. So I've given you a statement which says that the nuclear weapons pose an existential threat to global peace and security. What is an existential threat? Can anyone tell me what is an existential threat? Any idea? किसको कहते हैं existential threat? Yes. कोई ऐसी चीज जो आपकी existence को threat करे उसको हम कहते हैं existential threat. तो क्यों है ये existential threat मैं आपको बताता हूँ. But please make sure कि आप इस सारे points को note करें. How many weapons are we talking about? कितने weapons हैं? Global nuclear arsenal कितना है अभी? 14,900, right? And still counting. जब मैं कहता हूँ still counting, इसका मतलब ये है कि this number hasn't stopped because we have countries like Iran, KSA, Israel, which are potential nuclear aspirant states, which means that they're still in the process of developing their own nuclear weapons, or at least they're trying. So, at least for a decade now. And once they succeed, we're going to see more nuclear bombs added to this global tally of 14,900. B, we have countries which are in defiance of non-proliferation regime. अभी non-proliferation regime क्या होता है मैं इस पे आऊँगा बाद में. Such as Pakistan, such as India, such as North Korea, which are still developing more and more bombs. It means that this number hasn't stopped yet. We're getting more and more bombs added to it, and each bomb that is added to this global tally of 14,900, adds more or puts the global community more at risk to this massive destructive force of nuclear weapons. ये तो पहली reason है. दूसरी reason क्या है? We have 9 nuclear weapon states, and more ironically or interestingly, as you may like to put it, all these 9 nuclear weapon states have an ongoing rivalry. For instance, when we talk about America and US, Russia, their rivalry is the oldest perhaps. They fought a 45-year-long war. We call it the Cold War. And their rivalry continues as we speak now. You might have seen in the case of this recent Russian invasion on Ukraine and how the situation has folded out. Let's talk about America and China, their rivals. Let's talk about China and India, their rivals. Let's talk about America and North Korea, their rivals. And then we have rivals of the rivals, and that is Pakistan and India. So having 9 nuclear weapon states and an ongoing rivalry among them simply means that at any point of time, any of these two states could enter into a war, and that war could become a nuclear war. And then imagine what kind of destruction this would cause. Finally, there is another factor, and that factor is the presence of terrorist organizations, their splinter groups, and their global outreach. So this phenomena of terrorism, instead of being contained, has fanned out, courtesy the failure of 2-decade-long war on terror, which started with American invasion on Afghanistan, or you can say that it started with those 2 terrorist attacks which were carried out on the American soil, जिनको हम 9/11 के नाम से जानते हैं. और उसके बाद फौरन बाद जो है अमेरिका ने ये वॉर ऑन टेरर शुरू की. अब ये जो वॉर ऑन टेरर थी, the sole objective reportedly of that war was to fight and contain and root out terrorism from the world. But ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उसका उलट हो गया.
उलट ये हुआ कि टेररिज्म कंटेन होने के बजाय फैंड आउट हो गया, it spread out. So prior to this war on terror, we had only one global jihadi network and its name was Al-Qaeda. Today we have many more such groups and each having access to one part of the world or another, and they've become more deadlier, they've become more sophisticated, they've become more methodical, and they've become more um, expert in terms of technology. हमारा जो जनरल इमेज है टेररिज्म को लेके वो ये है कि व्हेन वी थिंक ऑफ अ टेररिस्ट तो वो स्टीरियोटाइपिकल एक इमेज हमारा बना हुआ है कि टेररिस्ट वो होता है जिसकी लंबी सी दाढ़ी है, पांचे उसने ऊंचे किए हुए, शलवार कमीज पहनी हुई है, सम काइंड ऑफ अ प्रिमिटिव एनिमल. Well, I can tell you, based on my experience of working in law enforcement agencies and with intelligence agencies, कि even if we talk about Pakistan, तो आपको सुन के शायद हैरानगी होगी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they have one of the best brains of this country in their ranks and files. People from all walks of life, people from one of the good universities, renowned universities. So they have engineers, they have accountants, they have professionals. तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉर ऑन टेरर के फेलियर की वजह से और उसके दरमियान में जो हुआ उसकी वजह से, जो एक लंबी डिबेट है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा इसमें, इनको और they've strengthened themselves and they've regrouped themselves and now they've access to different parts of the world, so much so कि आप देखिए कि 2016 में एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई जिसने आधे इराक को और आधे सीरिया को मिला के अपनी खिलाफत कायम कर ली, सेल्फ डिक्लेयर्ड कैलिफेट, जिसको हम आईसिस के नाम से जानते हैं, जिसको कुछ लोग दाइश भी कहते हैं. और उन्होंने 3 साल उस खित्ते पे हुक्मरानी की, बकायदा अपनी खिलाफत को रन किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस एरिया में, सीरिया में और इराक में नेटो की और अमेरिकन की और बाकी सारी कुव्वतों की बहुत ज्यादा प्रेजेंस थी. एक्सक्यूज मी. तो 3 साल लगे ग्लोबल कोलिशन सपोर्ट फोर्सेस को उन्हें वहां से निकालने में, और जब उनको वहां से निकाल लिया गया तो जब बाद में उन टेरिटरीज को रिक्लेम किया तो वहां से इस तरह की लैब्स मिली, इस तरह की फैक्ट्रीज मिली जहां पे वो मॉडर्न वेपनरी पे, मॉडर्न वेपन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे. उस समय क्या पता लगता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आज इतनी स्ट्रांग हैं कि अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, they lay their hands on nuclear technology, they are capable of reversing it. अगर आप में से कोई इंजीनियर है तो उसको पता होगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है. रिवर्स इंजीनियरिंग ये होती है कि अगर आपको एक चीज का आइडिया नहीं है, आप उस चीज को खोल के, देख के, अंदाजा लगा के और उस तरह की एक नई चीज बना सकते हैं खुद से, प्रोटोटाइप. तो ये आज इतने केपेबल हैं. आप इमेजिन कीजिए कि कितना हॉरेंडस सिनेरियो होगा कि अगर इनमें से किसी के हाथ ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लग गई. सो ये जो तीसरा फैक्टर है ये सबसे डेडली है, सबसे डेंजरस है, और ये 3 फैक्टर्स कलेक्टिवली हमें ये बताते हैं कि जो 14,900 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और ये जो इनएफिशिएंसी है नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम की, ये कलेक्टिवली they're posing an existential threat to global peace and security. I hope ये बात आपको समझ में आ गई होगी. Are we clear on this? Okay, that said, अब हम जरा आगे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं. तो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ठीक है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ना सिर्फ न्यूक्लियराइजेशन को समझने के लिए बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए. मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा यहाँ पे कि देखें, करंट अफेयर्स के बारे में यूजुअली ये कहा जाता है कि ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
but I beg to differ. Why I beg to differ is based on my experience. So in my two attempts, the first attempt I gave, which I unfortunately couldn't be allocated, I had 71 in current affairs. The next attempt I gave, I had 68. तो ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड कि आपको ये पता हो कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है. तो अटेम्प्ट करने का एक टिप मैं आपको ये दूंगा कि सिर्फ नरेशन पे फोकस ना करें, एनालिसिस पे फोकस करें. यू शुड बी एबल टू एनालाइज द कंटेम्परेरी सिचुएशन. और दूसरी चीज ये है कि आपको कुछ बेसिक थ्योरीज का पता होना बहुत जरूरी है. आप पेपर जितना एकेडमिकली अटेम्प्ट करेंगे उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे. तो आज हम कुछ थ्योरीज को भी देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है डेटरेंस. ये डेटरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू स्टॉप. नाउ लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि डेटरेंस बेसिकली द एबिलिटी ऑफ टू स्टॉप है क्या. तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, पर उस एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा आपको भी इमेजिन करना पड़ेगा. तो आई वुड लाइक यू टू इमेजिन कि यू आर इनटू अ फिजिकल फाइट. आप किसी से लड़ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम फिस्ट फाइट कह लें या बाउट कह लें या कहते हैं. ठीक है. तो जब आप किसी से लड़ते हैं, क्या नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है इंसान की जब वो किसी से लड़ रहा होता है? क्या दिल करता है आपका? सॉरी. आपका दिल करता है कि आप उसकी ऐसी की तैसी कर दें, यू नो, टू बीट द हेल आउट ऑफ हिम, मार दें उसको, डिस्ट्रॉय कर दें, है ना? यही दिल करता है, नेचुरली इंसान की इंस्टिंक्ट है. अब आप इमेजिन करें कि जिससे आप लड़ रहे हैं, that man happens to be a very strong, tall, muscular guy. ये जो माचो टाइप नहीं होते, जिन्हें जिम जा जाके अपनी बॉडी का बेड़ा बेड़ा गर्क किया होता है, इनके डोले निकले होते हैं बाहर, और आप जो है वो थोड़ा जरा मतलब स्किनी टाइप है. ठीक है. अब डिस्पाइट ऑल योर longing to beat the hell out of that person, would you beat him? जब आप उसको देखेंगे वो इतना टॉल है, मस्कुलर है, मारेंगे उसे हम? क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे बताइए? इसलिए नहीं मारेंगे कि आपको पता है कि भाई इसने मुझे मारा तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहना. ऐसे ही है ना? तो ये जो उसकी अपेरेंट स्ट्रेंथ है, ये जो उसकी अपेरेंट मस्कुलिनिटी है, ये जो उसकी अपेरेंट विजिबल उसकी फोर्स है, ये बेसिकली उस आदमी के लिए डेटरेंस का काम कर रही है. क्योंकि ये उसकी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से आप उस पर हमला नहीं कर पा रहे. ठीक है. और इसी तरह से लेट्स से कि अगर आप मतलब किसी तरह से लड़ रहे हैं, हो सकता है दोनों बराबर हो, देखने में कैसे हो, तो आप एकदम से एग्रेसिव होकर कहते हैं आज तो मैं इसको देख लूंगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही टेक्स आउट हिज वेपन. उसके हाथ में पिस्टल आ जाती है. फिर क्या करेंगे आप? आप पीछे हट जाएंगे. आपको पता है कि यार नो मैटर हाउ मच द फोर्स आई कैरी, मैं इस वेपन का मुकाबला नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव दैट वेपन. सो वो वेपन क्या बन जाएगा? वो उसकी वो एबिलिटी बन जाएगा जिसकी वजह से आप उस पर अटैक नहीं कर सकेंगे. सो इन बोथ द एग्जाम्पल्स, in the first one it's the physique, in the other one it's the weapon. They are the ability of that person which is basically stopping you from attacking that person, and that's why they both are playing the role of deterrence for these two individuals. ये बात समझ में आई है आपको? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डेटरेंस का,
स्टेट्स ने भी इसी आइडिया को अडॉप्ट किया है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि जब स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट आया, एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट आया, जब एक पॉलिटिकल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो आया वॉर का, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया सिक्योरिटी का, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो था डेटरेंस का, कि आप को एज ए स्टेट ये एबिलिटी चाहिए कि आप अपने आप को अपनी एनिमीज को रोक सकें कि वो आप पे अटैक ना करें। अब ये वर्ड डेटरेंस तो एक नया वर्ड है, बट द आइडिया प्रीडेट्स द वर्ड एंड it can be found in the earliest of the societies. तो इसकी जो हमें रूट्स मिलती हैं वो जाके हमें मिलती हैं एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स से। अब ये एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स कब एग्जिस्ट करती थी? ये एग्जिस्ट करती थी रफली 300 to 400 BC, जो मॉडर्न एनो डोमिनाई में एडी में कोई आज से आप कह लीजिए कि 2400 या 2500 साल पहले की बात है। अब ये एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स इसलिए सिटी स्टेट्स कहलाती थी बिकॉज these cities in the ancient Greek land, each was a state within itself. Why each was a state within itself? Because each had its own defined area, each had its own population, each had its own government, and each had its own army or a militia. Militia smaller army को कहते हैं, depending upon their size. But प्रॉब्लम क्या था? ये जो एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, they were constantly under attack either by the invading armies or sometimes they would go on war with one another. आपने शायद वो स्पार्टा मूवी देखी हो किसी ने, तो that's what the true depiction of ancient Greek city states is. So they realized कि यार ये तो काम चलता रहना है, तो हमारे पास कोई ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि जब कोई हम पे हमला करने आए तो वो उसको देख के ही रुक जाए। तो they came up with an idea जो आज भी यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन। अर्ली 19th सेंचुरी तक तो ये इन प्रैक्टिस यूज होता रहा है और आज ये एज ए वर्ड यूज होता है। फोर्टिफिकेशन क्या था? They started building fortresses around those cities. अब वो fortress क्या था? It was predominantly a high walled structure, a wall high enough, strong enough to be able to withhold any kind of external attack. तो invading armies जब आती थी तो उनको उन walls को गिराना होता था, और हर एक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि वो उसको गिरा सके। तो फिर क्या होता था कि वो they used to turn away. So those fortresses became the earliest known forms of deterrence. जैसे कि हिस्टोरिकल एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके ऊपर बड़ी अमेजिंग मूवी भी है which is called The Kingdom of Heaven. It's basically a story of Salahuddin Ayyubi conquering Jerusalem. तो Salahuddin Ayyubi ने जब Jerusalem को conquer किया, at that time he had the largest army in the world. And despite having the largest army in the world, और उस वक्त माइंड यू कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी थी, हम बात कर रहे हैं 7th सेंचुरी की, और ये सिटी स्टेट्स थी उससे भी कोई आप कह लीजिए 1000 साल पहले। तो उस वक्त तो ये कैटापोल्ट्स आ चुकी थी जिसको मंजनीक कहते हैं। तो इफ यू गेट अ टाइम डू वॉच द मूवी, यू वुड एंजॉय। तो despite having the largest army to himself, it took 180 days for Salahuddin Ayyubi to conquer Jerusalem. You know why? Because the Christian king and his knights, they fortified Jerusalem. तो वो 180 दिन बमबारी करते रहे और तब जाके they finally broke through the walls of Jerusalem and eventually captured it. तो आप सोचें कि स्मॉलर आर्मीज के लिए कितना मुश्किल होता होगा। इसीलिए वो फोर्टिफिकेशन जो थी वो अर्लीस्ट नोन फॉर्म्स ऑफ डेटरेंस है, और आज भी इसको एज ए वर्ड, एज एन आइडिया यूज किया जाता है। जब भी कोई कंट्री अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करती है तो हम कहते हैं इट इज फोर्टिफाइंग इटसेल्फ।
ये फोर्टिफिकेशन का आइडिया आज भी एग्जिस्ट करता है. सो सिंस द डेज ऑफ एंशिएंट ग्रीक सिटी states have used different means of acquiring deterrence, and by deterrence we simply mean the ability to stop the enemies from attacking them. So ये एक necessity है, ये एक modern दुनिया की और एंशिएंट दुनिया की एक आप कह लें कि नेसेसिटी रही है और आज भी है कि अगर आपको एज ए स्टेट सर्वाइव करना है तो आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी एनिमी को अपने ऊपर अटैक करने से रोक सकें. ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन दी जाती रही है मॉडर्न दुनिया में वो है कि जी दे आर वन ऑफ द मीन्स ऑफ अचीविंग डेटरेंस. ठीक है, और कुछ तो उसको कहते हैं कि अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेटरेंस, इसमें हम बाद में आते हैं. सो आई होप नाउ यू नो व्हाट डेटरेंस इज. ठीक है, और मैंने थोड़ा सा आपको उसमें हिस्ट्री का भी जरा बता दिया. डेटरेंस क्या आइडिया क्लियर हुआ है? ये अभी नहीं हुआ? गुड. अब क्योंकि आपको डेटरेंस का पता है तो न्यूक्लियर डेटरेंस को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा. न्यूक्लियर डेटरेंस बेसिकली का मतलब ये है कि व्हेन यू यूज न्यूक्लियर वेपन्स एज अ मींस ऑफ डेटरेंस तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस. ठीक है जी. गुड. न्यूक्लियर डेटरेंस को अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेटरेंस क्यों कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? मिस वजीहा, इतनी डिटेल से बताने के बाद मैं रिपीट करना मुनासिब नहीं समझता और बहुत टाइम वेस्ट होगा. इतनी डिटेल में मैंने जाके आपको एक्सप्लेन किया डेटरेंस को, और अभी भी आप कह रही हैं कि मैं रिपीट करूं. बहुत मुश्किल काम है. अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेटरेंस क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो इसलिए कि जब आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनते हैं तो जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो बिल्कुल वैसी हो जाती हैं जैसे आप थे उस माचो आदमी के सामने. उनकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो आप पे अटैक कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर इसने न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिए तो उनका तो कुछ नहीं रहना. और दूसरा ये है कि इट इज बिलीव्ड कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी फिर दे आर लीस्ट लाइकली टू गो ऑन वॉर फॉर अ फिनोमेना नोन एज, अभी आप में से कुछ लोगों ने यहाँ लिखा भी है, MAD, मैड, which stands for mutually assured destruction. इसका मतलब ये है कि दोनों को पता होता है कि भाई हम दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दोनों की म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है, तो फिर वो ऑल आउट वॉर को या एक हॉट वॉर को अवॉइड करते हैं. तो इट इज बिलीव्ड कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो आपने वो अल्टीमेट डेटरेंस अचीव कर ली है, यानी वो अल्टीमेट एबिलिटी अचीव कर ली है which will stop all kind of enemies from attacking your state. That is the idea, and that is the very justification which has been given by all the countries which have used or which have acquired nuclear weapons over the course of time since the bombing of Hiroshima and Nagasaki. ठीक है जी. मैं सामना नमाज ब्रेक ले लेते हैं. How many of you want to proceed on the break immediately? अभी तो थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हुआ था और आप ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं. $99 की क्लास में से, बल्कि 112 की क्लास में से 5-6 लोग ब्रेक पे जा रहे हैं. डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग यू लूज द वोट. Okay, let's proceed for 5 minutes break. All right? जी आप सबका वोट मैंने डाल दिया जी. क्या बात कह रहे थे?
What were we discussing? MAD, yes. But we had talked about MAD, right? MAD तो मैंने आपको explain कर दिया था. Okay, so basically we have covered two concepts as of now. One is deterrence, the other one is nuclear deterrence. And yes, I told you why nuclear deterrence is considered as an ultimate form of deterrence. That said, we're going to discuss two very important concepts. और इनको हम कहते हैं state behavior theories. ये state behavior theories क्या होती हैं भाई? कोई बताएगा मुझे? इनको स्टेट बिहेवियर थ्योरीज इसलिए कहते हैं. बेसिकली थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी चीज की, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है. स्टेट बिहेवियर थ्योरीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द स्टेट. स्टेट बिहेवियर थ्योरीज क्या करती हैं? दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट. बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर बेसिकली सम टोटल होता है एक्शन और रिएक्शन का. तो जिस तरह ह्यूमन बिहेवियर होता है, इसी तरह से स्टेट बिहेवियर भी होता है. तो एक स्टेट किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम में या रीजनल सिस्टम में किस तरह से बिहेव कर रही है, उसको समझने के लिए ये थ्योरीज बनी है. तो हम दो थ्योरीज को आज डिस्कस करेंगे. वन इज कॉल्ड एनार्की, the other one is called the balance of power. इनकी दोनों थ्योरीज आपको ये बताएंगी कि दुनिया में ये जो कन्फ्लिक्ट है ये क्यों एग्जिस्ट करता है और उस कन्फ्लिक्ट की वजह से स्टेट्स क्या करती हैं. देखिए, न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करना एक स्टेट बिहेवियर है. न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ये एनार्की क्या होती है? इसकी तीन assumptions हैं. ये थ्योरी ऑफ एनार्की तीन बातें assume करती है. नंबर वन, absence of central authority. Number two, self-help system. And number three, trust deficit. मैं आपको इन तीनों को one by one explain करता हूँ. तो theory of anarchy ये कहती है कि किसी भी इंटरनेशनल या रीजनल सिस्टम में सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती. अब ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है? सेंट्रल अथॉरिटी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जी, अभी हम आते हैं एनार्किक वर्ल्ड ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये तो थ्योरी कहती है ना, तो उसको समझना जरूरी है. सो सेंट्रल अथॉरिटी की बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक तो ये कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है ना वो एब्सोल्यूट होती है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते और वो सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होती है. तो नेशनल सिस्टम में यानी स्टेट के अंदर तो सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती होती है स्टेट, बट एक इंटरनेशनल सिस्टम में जिसके अंदर या रीजनल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स होती है, वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. जो सब स्टेट्स पे एब्सोल्यूट हो, सारी स्टेट्स उसकी बात माने और एक्सक्यूज मी और वो यूनिफॉर्म हो, सब पे इक्वली अप्लाई हो. जैसे यूएनओ के बारे में आपके जहन में आए किसी में से शायद कि ये सेंट्रल अथॉरिटी, तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट्स के ऊपर वो एब्सोल्यूट नहीं है. बी, वो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है वो इन इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी है. इन द फॉर्म ऑफ आप अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं सॉरी, और उसकी जो वीटो पावर्स है, तो उससे हमें पता लगता है कि भाई ये यूनिफॉर्म तो नहीं है. तो ये थ्योरी ये बिलीव करती है कि किसी भी इंटरनेशनल या रीजनल सिस्टम में सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती. जब सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो इट टेक्स अस टू द नेक्स्ट अजम्पशन कि वो इंटरनेशनल सिस्टम
या regional system in the absence of that central authority becomes a self-help system. And now what is a self-help system? A self-help system is a system where every state has to ensure its safety and survival on its own. हर स्टेट को अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल को खुद इंश्योर करना होता है, ठीक है जी। और क्योंकि सारी स्टेट्स अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल को इंश्योर कर रही होती हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं करती. सो दैट इज द थर्ड assumption of this theory of anarchy, कि within such system where there is an absence of central authority and every state is ensuring or is trying to ensure its safety and survival on its own, no state trusts the other state. So there exists a trust deficit among the states. ये तीन बातें आपको क्लियर हो गई हैं? Are we all clear on these three assumptions? अभी आपको और भी समझ में आएगा, मैं इसको भी मज़ीद elaborate करने लगा हूँ by drawing international system. ठीक है जी? Just wait and watch. So अभी हम क्या करने लगे हैं? I hope कि ये आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको international system. So I'm going to draw an international system and I'm going to populate it with some states, and then we are going to apply the theories, these three assumptions. Okay, just give me a second. So what I've done is I've drawn five, I've drawn a larger circle. This is an international system. जो बड़ा वाला circle आपको नजर आ रहा है. Within this international system, I have drawn 5 smaller circles. Each of these circles are basically representing a state. And the size of the circle basically indicates the power of that state. So just like any international system, we have some very powerful state, few relatively powerful states, and a couple of weak states. ठीक है जी? तो इससे हमें एक और कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा कि पावर क्या होता है. तो पावर हम इंटरनेशनल सिस्टम में डिफाइन करते हैं the ability of a state to dominate or influence other state or states. ठीक है जी? So as you can see, we have B as a very powerful state, then A and C relatively powerful states, D and E smaller states. अब इसके ऊपर हम theory of anarchy की ये assumption apply करते हैं 3. So इन पांचों states को ये 3 बातें पता हैं कि भाई यहाँ पे कोई central authority exist नहीं करती. इनको ये भी पता है कि इन्होंने अपनी safety और survival खुद ensure करना है, और इनको एक दूसरे पे trust भी नहीं है. तो अब जरा हम B को देखते हैं, जो सबसे powerful state है. तो B ये सोचती है कि भाई ठीक है, I'm the most powerful state, और हो सकता है इंडिविजुअली ये मुझ पे अटैक नहीं कर सकती 4 स्टेट्स में, बट व्हाट इफ दे कलेक्टिवली अटैक, क्योंकि ट्रस्ट नहीं ना करते एक दूसरे पे, तो उसके जहन में बात आती है, तो हो सकता है वो मुझे अंडरमाइन कर दें. तो वो क्या करती है कि वो अपनी पावर को एनहांस करती है मजीद आउट ऑफ दिस इनसिक्योरिटी. So I'm drawing a box and an X, and remember this box and an X represents increase in the power of state. तो स्टेट भी अपनी पावर को एनहांस करती है. अब this increase in the power of state B creates a feeling of insecurity among the remaining 4 states. एक तो ये कि वो पहले ही ट्रस्ट नहीं करते, फिर उन्हें ये फील आता है कि भाई ये सबसे पावरफुल स्टेट है और उसने पावर मजीद एनहांस कर दी. So now they've started feeling more insecure. अब स्टेट A और C क्या करेंगे?
क्योंकि relatively powerful हैं तो उनके पास resources हैं, तो वो भी अपनी power को enhance करेंगे. अब C और D और E जो है, they're relatively smaller states. They may not have the resources to enhance their power on their own. So what do? They form an alliance. वो collectively एक alliance बना लेते हैं कि हम मिलके मुकाबला करेंगे अगर ऐसी कोई जरूरत पेश है. So they collectively enhance their power. Now, this increase in the power of these four states, which they had done out of the feeling of insecurity due to the increase in power of state B, once again creates a feeling of insecurity back towards state B. State B दोबारा insecure feel करना शुरू कर देती है, तो वो अपनी पावर को मजीद enhance करती है और फिर feeling of insecurity दोबारा इधर shift कर जाती है और फिर वो मजीद अपनी पावर को enhance करते हैं. And this thing goes on and on and on, where increase in the power of one state creates the feeling of insecurity among the rest. And in order to quell that feeling of insecurity, they do try to enhance their power as well. और इसको हम कहते हैं security dilemma. और ये वो security dilemma है basically, या dilemma है as you may like to pronounce it, जो के result है anarchic international system का. और anarchic international system क्या है? वो वही 3 assumptions हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ. अब ये security dilemma जो है, इसकी हमें real world से examples भी मिलती हैं. So 2 ऐसी practices हैं जो basically आपको बताती हैं कि ये security dilemma जो है, it's a real thing. It actually exists among the states. और वो 2 practices कौन सी हैं? कोई बताएगा मुझे? एक है arms race और एक है weaponization, और उसको हम armament भी कहते हैं. आर्म्स रेस क्या है कि अगर आप पूरी दुनिया को उठा के इस वक्त देखें तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त जो स्टेट्स हैं, they are in kind of a race. They are competing with the other state or states to have more and more weapons. जैसे कि आपके सामने एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया की है, आपके सामने एग्जांपल अमेरिका और चाइना की है, अमेरिका और यूएसएसआर की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो सब पूरी दुनिया में एक रेस चल रही है जिसमें हर कंट्री जो है वो दूसरे से ज्यादा या उसके मुकाबले में वेपन्स परचेज कर रही है. इसको हम कहते हैं आर्म्स रेस. और दूसरा है वेपनाइजेशन, जिसमें कंट्रीज जो है इन जनरल वो वेपन्स परचेज कर रही हैं. ठीक है वलीउल्लाह भाई, अभी तो बैलेंस ऑफ पावर मैंने पढ़ाया भी नहीं. अगर आप फोकस करें तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने की जरूरत पेश ना आए. सो पहले एनार्की समझ लें, बैलेंस ऑफ पावर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी आपको, तो कैसे रिपीट कर दूं? उसको पहले समझाना पड़ेगा ना. इस तरह के क्वेश्चंस ना किया करें, आप मोमेंटम ब्रेक करते हैं. आई अवॉइड आंसरिंग सच क्वेश्चंस. मोमेंटम लूज होता है और उससे नुकसान होता है. अगर अब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो बाकियों को क्यों भाई तकलीफ दे रहे हैं? और डिस्कनेक्शन के बाद आप ये करते हैं कि आप अपने किसी कलीग से पूछते हैं कि भाई क्या चीज रह गई थी, उसको मैं कवर कर लूं, रादर देन कि आप एक ब्लाइंडर जो है वो टीचर पे थ्रो कर देते हैं. हम क्या बात कर रहे थे? मैं आपको एग्जांपल दे रहा था आर्म्स रेस की और वेपनाइजेशन की, राइट? तो आर्म्स रेस बिल्कुल उसी तरह से है. अगर आपने कभी एथलेटिक्स देखे हो तो वहां पे आपको नजर आएगा कि एक रेड से ट्रैक पे जो है वो 10 एथलीट्स भाग रहे होते हैं. अब वो 10 एथलीट्स कैसे भाग रहे होते हैं कि जो 10th वाला होता है ही इज कंपीटिंग विद द 9th वन, द 9th वन इज कंपीटिंग विद द 8th वन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दुनिया में भी ऐसे ही एक रेस लगी हुई है कि हर कंट्री किसी एक कंट्री के साथ रेस लगा के बैठी हुई कि भाई मैंने भी ये सारे वेपन्स लेने जो ये ले रही.
और उसके पीछे क्या है? सिक्योरिटी डिलेमा। और उसके पीछे क्या है? द एनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज पर दिस थ्योरी ऑफ एनार्की। ये मैं नहीं कह रहा, थ्योरी ऑफ एनार्की कह रही है। दूसरा है वेपनाइजेशन। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कोई डायरेक्ट किसी के साथ मुकाबला नहीं है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कनाडा है। दे आर नॉट अंडर थ्रेट बाय एनी इमिनेंट force, or they don't have any regional or bilateral rivalries as such, but each year they end up spending more and more on their defense budgets because वो generally threatened feel कर रहे हैं. So this theory help us understand ये arms race. और देखिए न्यूक्लियर वेपन्स क्या है, ये आर्म्स रेस का एक पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियर आर्म्स रेस कह सकते हैं. वेपन की नेचर फर्क है, लेकिन न्यूक्लियर एट द एंड ऑफ द डे इज अ वेपन, राइट? सो दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड कि दुनिया में न्यूक्लियराइजेशन क्यों हो रही है. ये वेपन्स रेस का रिजल्ट है, और उसके पीछे ये सिक्योरिटी डिलेमा है, और उसके पीछे आपकी ये थ्योरी ऑफ एनार्की है. ठीक है जी, are we clear on this? Great, let's move on. अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पावर की. वो जो एडवोकेट कौन थे, भूल गया मैं, जिनको ये लगा कि हमने बैलेंस ऑफ पावर पढ़ ली है. तो अब हम जरा बैलेंस ऑफ पावर को देखते हैं. अच्छा, बैलेंस ऑफ पावर को समझने के लिए आपको एक साइंटिफिक फिनोमेना का पता होना बहुत जरूरी है, जो आपने शायद पढ़ भी रखा हो, और वो आपने पढ़ा होगा अपने ओ लेवल्स में या फिर मैट्रिकुलेशन में. उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम का नाम सुना आप लोगों ने? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अच्छा, जिन लोगों को नहीं याद आ रहा उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हेल्प देम अंडरस्टैंड कि इक्विलिब्रियम होता क्या है. और इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कोई साइंस पढ़ना भी जरूरी नहीं है. अगर आप कभी वॉक इन द पार्क करें तो वहां पे आपको एक स्विंग नजर आएगा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीसॉ कहते हैं. सीसॉ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है? बेसिकली इट इज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस. फिर ये जो आपका बैलेंसिंग स्केल है जिसको हम तराजू कहते हैं, दिस इज अनदर आइडियल एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कहता क्या है कि अगर कोई भी चीज जो है उसका बैलेंस, यू नो, दिस इज इक्विलिब्रियम. अगर आप सीसॉ को देखें या बैलेंस को देखें, स्केल को देखें, तराजू को देखें, तो इनिशियली वो आपको ऐसे परफेक्ट स्टेट ऑफ बैलेंस में नजर आता है. नाउ इफ यू पुट अ वेट ऑन वन साइड ऑफ दैट बैलेंस, सो उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, एंड इट टिल्ट्स टुवर्ड्स जहां पे वेट आपने पुट किया है. तो उसको इफ यू हैव टू रिस्टोर इट बैक टू इट्स ओरिजिनल perfect state of balance, you have two options. A, you lift that weight off, or you apply the equal amount of weight on the other side. यही है theory of equilibrium, right? ठीक है. So यही concept है जो कि balance of power में apply होता है, but with a slight modification. वो slight modification क्या है कि देखें, इंटरनेशनल सिस्टम में परफेक्ट बैलेंस नहीं हो सकता. ऐसा हो ही नहीं सकता कि पावर सबके पास इक्वल हो. क्यों नहीं हो सकता? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द रीजन? जी, उसका जवाब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे. यू सी, there are always going to be states which are more powerful than the other ones. नहीं, डेटर्न्स कैसे कोई ताल्लुक है? As you can see right on your screens, you know, there are some powerful states, there are some less powerful states. अच्छा, ये साइज तो मैंने यहाँ पे एक सिंपलिस्टिक फॉर्म के लिए बनाया था. एडवोकेट साहब, आप थोड़ा सा जरा चीजों को समझ नहीं रहे. ये सिर्फ आपकी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन के लिए था. It's not necessary that it's the size of the state which determines its power. Power is determined by many factors. You know, it's about your strategic location. It's about the kind of resources you have. It's about the kind of manpower you have. It's about how much political clout as a state you carry. It's about how
better your economy performs in the international or regional affair. So there are a lot of factors which contribute to this concept of power. But at the end of the day, what you need to know is that in an international system or in a regional system, there are always some states which are going to be more powerful than the other for one reason or the other. ठीक है? So ऐसा हो नहीं सकता कि all the states within a regional or an international system are going to be in a perfect state of power, or they share or they have this balance of power. So that's why this equilibrium concept is being applied in the form of balance of power with a slight modification. तो यहाँ पे balance पर हम किस चीज को consider करेंगे, ये समझना आपके लिए जरूरी है. Balance हम consider करेंगे तब, please make a note of it, जब within an international or a regional system कोई एक स्टेट इतनी पावरफुल ना हो कि वो किसी और स्टेट को या पूरे सिस्टम को डोमिनेट कर सके. आई रिपीट, हम बैलेंस ऑफ पावर कंसिडर करेंगे कि एक सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जब कोई भी स्टेट इतनी पावरफुल ना हो कि वो किसी एक स्टेट को विद इन दैट सिस्टम और पूरे सिस्टम को डोमिनेट कर सके. तो हम कहेंगे कि भाई अभी परफेक्ट ये स्टेट ऑफ बैलेंस एग्जिस्ट करती है, इसको हम बैलेंस ऑफ पावर का नाम देते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग द स्टेट्स विद इन दैट रीजनल और इंटरनेशनल सिस्टम. ये बात समझ में आई आपको? कहाँ गायब हो गए सब? आ गई ना? अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि मिस अलिशबा, अभी पहले समझ लें फिर हम देखते हैं कैसा मुमकिन है कि नहीं. देखते हैं कि वो जो पावर है, वो पावर जिसकी वजह से कोई स्टेट इस इंटरनेशनल सिस्टम में जो आपके सामने है किसी और स्टेट को या पूरे सिस्टम को डोमिनेट कर सके, उसको हम फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग सिंबलाइज करते हैं विद अ बॉक्स एंड एन एक्स. रिमेंबर आई मेड दैट बॉक्स एंड एन एक्स इन द प्रीवियस सिस्टम वी ड्रू. सो हम फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ये सपोज कर लेते हैं कि that box and an X represents that power through which one state becomes powerful enough to dominate one or other states or perhaps the whole system within an international system. ठीक है जी? So do you guys see a box and an X here? क्या आपको बॉक्स और एक्स नजर आ रहा है? नो. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अभी इस सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि किसी भी स्टेट के पास वो बॉक्स नहीं है, यानी कि वो पावर नहीं है जिसकी वजह से वो किसी एक स्टेट पे या पूरे सिस्टम पे डोमिनेट कर सके. यहां तक बात समझ में आई है? गुड. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. इतनी डिटेल से बताने के बाद भी कोई मुझसे पूछ रहा था अभी कि सर वो बॉक्स और एक्स का है, भाई उसका क्या जवाब दूंगा? सो लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो. स्टेट बी फॉर वट एवर रीजन, हम रीजंस में नहीं जा रहे हैं, increases its power, and now state B is in a position where it can dominate the whole system. तो बैलेंस ऑफ पावर अब क्या हुआ है? डिसरप्ट हो गया है, and it has tilted into the favor of state B.
जी, ये बात समझ में आ गई कि ये इसने जो भी पावर एक्वायर की है जिसकी वजह से ये किसी एक स्टेट पे या पूरे सिस्टम पे डोमिनेट कर सकती है, there has disrupted the balance of power. B, the balance of power has shifted or tilted in the favor of state B. Now, what will happen? The remaining, please make a note of it. The remaining four states will react. The remaining four states will react to restore the balance of power. क्यों रिस्टोर करना चाहेंगे? क्योंकि देखें, जब बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है तो स्टेट्स को ये डर नहीं होता कि कोई एक स्टेट उनको या पूरे सिस्टम को डोमिनेट करेगी. एक बात. दूसरा, जिस तरह हमने डेटरेंस को डिस्कस किया था कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हर स्टेट अपनी आपको प्रोटेक्ट करना चाहती, इसी तरह से जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है कोई स्टेट भी नहीं चाहती. ठीक है जी. तो ये जो चार स्टेट्स हैं, व्हाट विल दे डू? दे विल रिएक्ट टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर. अब रिएक्ट कैसे करेंगे? स्टेट ए क्योंकि रिलेटिवली पावरफुल है तो वो भी अपनी पावर को एनहांस करेगी. स्टेट सी भी पावरफुल है तो वो भी अपनी पावर को, an alliance, and they will collectively try to increase their power. But remember that here these states are reacting. They are reacting to restore the balance of power. Now, I want you to focus on the sizes of these boxes and axes and tell me, has the balance been restored? Please focus on the sizes of the boxes and axes and tell me, no. No. Why no? Why no? Sir, please go see an eye specialist tomorrow in the morning. आपने गौर से नहीं देखा या फिर? Yes, Miss Sadia seems to have the right answer. Bingo. भाई, ये जो coalition है, it has come with a more power. तो अब क्या हुआ है? Balance अभी भी restore नहीं हुआ. Difference सिर्फ इतना आया है कि अब ये जो balance of power है, it has tilted in the favor of this coalition or in the favor of this alliance. ठीक है, पहले वो बी की तरफ टिल्ट कर गया था, अब वो किस तरफ टिल्ट कर गया है? This alliance, because they have come to acquire more power. Now, tell me which states will react. Come on, people. A, B and C, simple. ये तीन स्टेट्स रिएक्ट करेंगे क्योंकि अब इनको खतरा पड़ गया कि भाई इससे. So A, B and C will react now, and they will react to restore the balance of power, just as these four had reacted to restore the balance of power. तो ये बस दो ऑप्शंस हैं कि वो इस पे हमला कर दें या इसकी अलायंस को खत्म कर दें. तो अलायंस खत्म करना ज्यादा आसान होता है. तो स्टेट बी माइट अप्रोच स्टेट डी और उसे कहती है कि तुम ये क्या ई के साथ अलायंस बना के बैठी हुई हो? लुक एट मी, आई एम द मोर पावरफुल स्टेट, कम जॉइन हैंड्स विद मी. सो एक नई अलायंस बन जाती है बिटवीन डी एंड बी. अब ई बेचारी जो है वो फील करती है कि शी इज बीइंग टच्ड बाय स्टेट डी. तो either this approaches the two or either of the two approaches state E, and they also form a new alliance. इसको हम कहते हैं shifting of alliances or realignment of blocks or states. But remember, all of this is done
to restore the balance of power. Clear हुई बात? Good. चले जी, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए. There are many examples, उस्मान, लेकिन मसला ये है कि आप में से बहुत सारों ने यूरोपियन हिस्ट्री शायद ना पढ़ रखी हो, तो इसलिए मैं उन एग्जाम्पल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स को बताने के लिए मुझे फिर वो हिस्ट्री भी बतानी पड़ेगी, जिसका हमारे पास टाइम नहीं है. सो जैसे भी आपने वियना का जिक्र किया, ट्रीटी ऑफ वियना का, और बहुत सारे हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस में एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसको हम जरा न्यूक्लियराइजेशन पे लेके चलते हैं ना. तो अगर आप पाकिस्तान को देखें और ईरान को देखें और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना को देखें, तो दे आर आल्सो परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. हमने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ही बैलेंस करने के लिए किया था. ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ही बैलेंस करने के लिए कर रहा है. रशिया ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ही इसलिए किया था. और अभी आप जब हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियराइजेशन पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर से ये चीज समझ में आएगी. ठीक है जी. तो यहाँ तक कोई मसला मसाइल हो तो मुझे बताइए, बिफोर वी कुड गेट ऑन विद स्टार्टिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. गुड जी जी, आगे चल रहे हैं. अब हम एक ये जो हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियराइजेशन है इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया. तो थोड़ा सा मैं आपको पहले एलैबोरेट करता हूं, देन आई एम गोइंग टू मेक यू वॉच अ वीडियो. इट ऑल स्टार्टेड विद वर्ल्ड वॉर 2. और वर्ल्ड वॉर 2 आपको जैसे कि पता है, इट वाज फॉट from 1939 to 1945, September 1st, 1939 to September 2nd, 1945. And it started with Germany invading Poland. Or World War II में दो sides थी. On one side we had the Allied forces, on the other side we had the Axis powers. The Allied forces initially comprised of Britain and France, and later on they were joined by the Canadians, Americans, and the Soviets. On the other side, we had Germany, Italy, and Japan. So, World War II is responsible for this. But during World War II, एक project launch किया गया जिसको Manhattan Project का नाम दिया जाता है. So, Manhattan Project is the mother of nuclear bombs which were dropped on Hiroshima and Nagasaki. ठीक है जी. तो पहले आप इसकी लीनियर हिस्ट्री देख लें, फिर इसका एनालिसिस मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा once you're done watching it. ठीक है जी. सो मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ और हम इकट्ठे भी इसको YouTube पर देख लेते हैं. ये वीडियो मैंने डाउनलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा जरा लेंथी है, तो मैंने कहा चलें उसको YouTube से ही देख लेते हैं. जस्ट अ सेकंड. लिंक इसलिए कि अगर आपको चल ना रहा हो लिंक, तो आप यानी यहाँ से आपको ना नजर आ रहा तो आप उधर से खुद देख लीजिए. एंड आई एम गोइंग टू प्ले इट फॉर यू नाउ. ठीक है जी, लेट्स वॉच. You're counting down the seconds until you can skip the For years, Nazi Germany has conducted a series of military threats on its neighboring countries to eliminate all political opposition and consolidate its power. After the German invasion of Poland in September 1939, World War II was officially launched.
In a war initiated by German aggression and dreams of conquest, there was a race to build an atomic bomb first, in which the United States was one of the competitors. With the belief that whoever had the bomb first would win the war, the United States activated a project codenamed the Manhattan Project, involving top leading scientists and U.S. engineers to work on the development of the world's first ever nuclear weapons. How the Manhattan Project was formed. The story actually began in 1938 in Berlin, Germany, where a group of German physicists, namely Otto Hahn, Lise Meitner, and Fritz Strassmann, unexpectedly discovered the secrets of nuclear fission. Then the news of their fission experiments got out to the Allied powers, spreading the fears that Germany was working on creating a new type of bomb capable of massive destruction. In 1939, some scientists fleeing from the fascist regimes to the US, including Leo Szilard, Enrico Fermi, and Eugene Wigner, had persuaded Albert Einstein to send a letter to President Franklin D. Roosevelt informing of the dangers of atomic technology in the hands of the Axis powers. This historic letter set in motion the American nuclear research program to acquire the bomb before Nazi Germany did. The Advisory Committee on Uranium was first set up in Washington, D.C. as a team of scientists and military officials who researched uranium as a new kind of superweapon. After some changes over time, it was officially named the Office of Scientific Research and Development, OSRD, in 1941. That same year, the Japanese attack on Pearl Harbor brought the U.S. officially into World War II, in which the OSRD played a role as a military initiative with the support of top leading scientists. In 1942, the Manhattan Engineer District, led by Colonel Leslie R. Groves, was established in the Manhattan Borough with the purpose of creating an atomic bomb. The project was later named the Manhattan Project, as much of the United States stockpile of uranium ore was located in the Manhattan Borough of New York City. However, New York City, due to its high population density and the proximity to the coast, soon lost ground as an ideal place for a super-secret project. Just wanted to check कि आपको नजर आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है? Are we on the same page? Okay, good. Shall let's resume it then. For security reasons, the laboratories were later established at Oak Ridge, Tennessee, Hanford, Washington, and Los Alamos, New Mexico, in isolated places far from urban centers and away from the coast. The theoretical physicist J. Robert Oppenheimer from the University of California, Berkeley, was assigned the project's scientific director of the Los Alamos Laboratory in northern New Mexico, where most of the work was done. What the Manhattan Project did. The process of creating an atomic bomb was a challenge to the Uranium Committee, as they needed to solve the puzzles about how to make weapons out of uranium and plutonium, an element that doesn't occur in nature but can be made from uranium-238. At first, scientists were not even trying to make a bomb, but to figure out how to isolate the right kind of uranium to create the chain reaction. Therefore, at the early stage of the project, most of the time and money were spent finding out how to enrich uranium, or in other words, how to separate uranium-235 from uranium-238. Then they had to figure out how much uranium-235 was needed to create critical mass to sustain a nuclear chain reaction, as well as how to trigger a reaction at the uranium atom. None of this research was easy, but the scientists eventually succeeded in solving all of these puzzles after just a couple of years. By 1942, with all the earlier questions answered, the project was officially authorized by President Roosevelt and codenamed the Manhattan Project.
conducted in the Los Alamos lab, where two such weapons were made later. One fueled by uranium-235 and the other by plutonium-239. It was also the place where the first Manhattan Project bombs were built and tested. At 5:30 a.m. on July 16, 1945, scientists at Los Alamos Laboratory carried out the Trinity test, which exploded the first atomic bomb, the Gadget, using plutonium at the site near the Alamogordo Air Base, 120 miles or 193 kilometers south of Albuquerque, New Mexico. The explosion came as an intense light flash, a sudden wave of heat followed by the rise of a large mushroom cloud extending to 40,000 feet, 12,200 meters from the desert floor. The bomb generated an explosive power equivalent to 15,000 to 20,000 tons of trinitrotoluene TNT, signaling the beginning of a frightening nuclear age. The bombing of Hiroshima and Nagasaki. After the death of Roosevelt, Harry Truman was named the 33rd President of the U.S. in April 1945. 2 months before the Trinity test, the Allies defeated Germany while the war with Japan continued. That same year, the Potsdam Conference, held near Berlin on July 26th, issued a declaration demanding unconditional surrender of Japan, or else Japan will face prompt and utter destruction. The Japanese refused the terms outlined in the Potsdam Declaration, despite having little chance of winning after the war with the Allies. With no surrender agreement from Japan, Truman authorized the use of the bomb on Japan. On August 6, 1945, an American B-29 bomber named the Enola Gay dropped the little boy bomb on the city of Hiroshima. This atomic bomb using uranium-235 exploded nearly 2,000 feet above Hiroshima with a force equal to 15,000 tons of TNT, instantly devastating an area of 5 square miles. Truman called for surrender the day after the bombing at Hiroshima, but once again the Japanese government refused. The next atomic bomb, named Fat Man, a plutonium-239 type, was dropped on Nagasaki on August 9th, producing a blast equal to 21,000 tons of TNT. The two bombings killed a total of more than 200,000 people and forced Japan to initiate surrender negotiations the next day and formally surrender on August 14, 1945, bringing World War II to the end. Immediate and long-term results of the Manhattan Project. Despite causing unprecedented destruction and death, the significance of the Manhattan Project with the atomic bombing was that it forced Japan to surrender unconditionally and put World War II to the end. Besides this immediate effect, the long-term impacts of the Manhattan Project are unknown and unknowable. The radiation exposure poses adverse impacts on the health of people who get involved. Specifically, it is believed to increase the rate of getting cancer in survivors and birth defects of children. Additionally, the revelation of the Manhattan Project and the end of World War II did not bring about world peace, but a super conflict later between the Soviet Union and the US after that. And on top of that, it was the detonation of these first nuclear bombs that furiously pushed the whole world into a new age, the frightening atomic age. जी
वीडियो देख लिया आप लोगों ने? अच्छी थी? अच्छा, ये बेसिकली आपको हिस्ट्री का एक थोड़ा सा आइडिया देना था। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक टिप शेयर कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा पेपर के बारे में भी गाइड कर देता हूँ कि करंट अफेयर्स का पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना। तो उसके लिए मैं जो टर्म यूज करता हूँ वो है 25-75 रूल। ये 25-75 रूल है क्या, इस पे हम बात करते हैं। गलती से मैंने कुछ और लिख दिया, रूल की स्पेलिंग जरा ठीक है। आई हैव शेयर्ड द लिंक लिशपा ऑलरेडी, इट्स देयर चैट बॉक्स में से देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, हिस्ट्री हम आप लोगों को क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा कि ये वाकयात क्यों है। बट पेपर में आपने हिस्ट्री नहीं लिखनी, रिमेंबर इट्स अ पेपर ऑफ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। उसके लिए मैं, जो कोई मुझसे पूछता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ फॉलो द 25-75 रूल। व्हाट इज 25-75 रूल? कि अगर आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो नरेशन है और जो हिस्ट्री है वो 25% होना चाहिए, उसमें 75% उसमें आपकी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन और उसका एनालिसिस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री आप वहां पे एक्सप्लेन नहीं करते, हिस्ट्री को आप एज ए पासिंग रेफरेंस यूज करते हैं। यू जस्ट गिव अ पासिंग रेफरेंस वेयरएवर एंड व्हेनेवर नीडेड। तो आपका फोकस होता है 75% ऑफ योर आंसर should include analysis, should include contemporary situation and your understanding of it. तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? और आपका एनालिसिस जो है वो इन्फॉर्म्ड एनालिसिस होना चाहिए। इट शुड बी not a layman's analysis. It should be backed by facts. It should be backed by statistics. It should be backed by historical evidences. And it should not be containing any sweeping statements. It should be very balanced. इसलिए अखबार पढ़ा करें, उसमें सबसे पहले एडिटोरियल्स पढ़ा करें। एडिटोरियल्स हेल्प यू बिल्ड अ बैलेंस एनालिसिस, अ बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है। हिस्ट्री जो होती है इट्स रिटन विद प्रेजुडिस। हिस्ट्री का पेपर भी जो होता है वो प्रेजुडिस ही सामने रख के अटेम्प्ट करते हैं। बट कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर और करंट अफेयर्स इन पर्टिकुलर, वहां पे आप अपने प्रेजुडिस को यूज नहीं करते। इट हैज टू बी अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं था कि आप ये हिस्ट्री पेपर में लिखने बैठ जाएं। A, it was to help you build a historical understanding. B, it is to help you understand the current situation. Okay? चले जी, ये तो हो गया हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। अब हम आते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद क्या हुआ। सो द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 marked the beginning of 3 things. So 3 चीजें क्या हैं? Number 1, the nuclear age. Number 2, the bipolar world order. Number 3, the Cold War. ये तीनों चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर इंटरकनेक्टेड, excuse me, they are interconnected and they have huge impact on the nuclear proliferation. तो ये मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले आज अब हम जरा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को भी देख लेते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या है भाई, और फिर हम इन 3 चीजों को देखेंगे। ठीक है।
So nuclear proliferation की जो definition है वो ये है कि the spread of nuclear weapons, nuclear technology and nuclear systems. Proliferation होती है spread of anything. जब हम nuclear proliferation की बात करते हैं तो उसका मतलब है the spread of nuclear weapons, nuclear technology and nuclear systems. ठीक है? Definition समझ में आ गई? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की दो टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और एक को हम कहते हैं वर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर विल गेट बैक टू दोस थ्री थिंग्स और आपको फिर समझ में आएगा कि ये प्रोलिफरेशन के लिए कैसे हुई और ये तीन फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द nuclear proliferation that we witness today in the world. मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए और एक ब्लू कलर का कोई पेन ढूंढ लेने दीजिए क्योंकि उसके बजाय मैं शायद एलैबोरेट आपको ना कर पाऊं. ओके, हियर वी गो. सेमी ब्लू मिल गया मुझे और कोई रेड भी मिल गया. ओके, so I want you to focus. I want you to focus on these two pens, or one is rather a pencil. The other one is a fountain pen. Now, imagine कि ये दो states हैं. Going by their color, if you are to choose कि इनमें से nuclear state कौन सी है और non-nuclear state कौन सी है, which one is a nuclear state? Red one, right? Which one is a non-nuclear state? The blue one, right? So now, if this focus. If this nuclear state transfers its nuclear weapons, nuclear technology, or nuclear systems to this non-nuclear weapon state, this spread from a nuclear weapon to a non-nuclear weapon state would be called horizontal nuclear proliferation. Are we clear? ये समझ में आ गया? इसको किसी ने नहीं कहना कि रिपीट करें. Good. Now let's talk about vertical nuclear proliferation. So which nuclear state do you see here? Which state do you see here? Nuclear weapon state, right? Do you see a non-nuclear weapon state here? No. So, if this nuclear weapon state enhances its existing nuclear weapons, either quantitatively or qualitatively, both way, the proliferation would be called vertical nuclear proliferation. Which proliferation? Vertical nuclear proliferation. ये बात समझ में आई? अब मैं आपको quantitative और qualitative का difference भी बता देता हूँ. Say this nuclear weapon state has 5 nuclear weapons. It decides to make 5 more. Now it's a quantitative increase. It's still a vertical nuclear proliferation. And if it enhances its technology, modifies its technology, makes it more efficient, more accurate, more deadly, it enhances its systems, still it would be a nuclear proliferation, but a qualitative nuclear proliferation. Both ways, the proliferation would be considered vertical nuclear proliferation. यहाँ तक बात समझ में आ गई? गुड. आगे चलते हैं जरा और अब हम वापस उन फैक्टर्स पे आते हैं जो मैंने आपको बताए थे. जरा कोई यहाँ पे दोबारा रीड टाइप कर देगा उन फैक्टर्स को फॉर एवरीवन. वो 3 फैक्टर्स क्या थे? I told you
कि the end of World War marked the beginning of three things. वो तीन चीजें क्या थी? कोई बताएगा मुझे? Good, thank you. सात. ओहो, wait. बस रुक जाए. बाकियों को टाइप करने की जरूरत नहीं है. Thank you. Please stop. So I told you the end of World War II basically marked the beginning of three things. The nuclear age, the bipolar world order and the Cold War. अब ये तीनों एक दूसरे के साथ भी लिंक हैं और इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है nuclear proliferation के साथ. And I'm going to elaborate all three of these and I'm going to tell you how they're responsible for the nuclear proliferation or the most of it, if not all of it. Starting with the nuclear age self-explanatory है कि World War II से पहले किसी को पता नहीं था कि भाई ये न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कर सकता है. So जब दुनिया ने देखा कि what kind of destructive power it carries, that set a new age, an age where countries have tried and they're still trying to acquire nuclear weapons. And we are also living through the same age. इसको nuclear overhang भी कहते हैं, which is kind of a slang, but you can use in the paper as well. ठीक है जी, ये बात clear होगी? बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? देखें, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो दुनिया का ऑर्डर एग्जिस्ट करता था वो मल्टीपोलर था, यानी कि मल्टीपल पावर हाउसेस थे और वो सारे इंपीरियलिस्टिक पावर हाउसेस थे. इंपीरियल एज थी. वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई यूरोप में. यूरोप वाज द बैटल ग्राउंड और जो इंपीरियल पावर्स थी उस वक्त की वो यूरोप में ही एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि ऑटमन्स है which is on the crossroads of Europe. Britain hai, France hai, Spain hai, Spanish hai. So both the wars brought a lot of destruction and chaos for the European powers. और ये उसकी वजह से they eventually collapsed. और इसका जो eventual beneficiary था, particularly World War 1 और 2 का और फिर World War 2 का भी, वो यूएसए और यूएसएसआर थे. सो एक नया ऑर्डर दुनिया में आया और वो ये था कि मल्टीपोलर सिस्टम खत्म हुआ और बाइपोलर वर्ल्ड बन गया जिसमें दो सुपर पावर्स थी. बट दीज टू सुपर पावर्स डिडंट सी ईच अदर आई टू आई. देयर एग्जिस्ट an ideological clash between the USSR and the USA, and that existed in the form of capitalism and communism. Okay? And that very clash became the reason of beginning of another war, जिसको हम the Cold War कहते हैं, which started right after World War II and lasted for about good 45 years until 1979, when the Soviet Union was finally dismantled and another order emerged from the ashes of that Cold War, and that is the unipolar order. ठीक है, जब जो कि आज भी in most of its form intact है, जिसमें the sole superpower exists in the world is USA. अभी जो 45 year long era है Cold War का, ये बड़ा significant है from the perspective of nuclear proliferation, क्योंकि कोल्ड वॉर बेसिकली इसमें एक ही काम किया गया दोनों साइड से. वो ये था कि both the superpowers they tried to undermine each other on all the fronts, whether it was political front, whether it was economic front, whether it was technological front, whether it was military front, or whether it was a propaganda front. ठीक है. और यही राइवलरी थी जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई. सो जब 1945 में वॉर खत्म हुई और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उस वक्त दो सुपर पावर्स थी. न्यूक्लियर वेपन एक के पास था, व्हिच इज यूएसए. तो एक बड़ा
शदीद इम्बैलेंस ऑफ पावर था बिटवीन द टू सुपर पावर्स, तो फिर यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन बनाया बाय 1949। उसके बाद अमेरिका ने इनकरेज किया अपने एलाइज को, ब्रिटेन और फ्रांस को, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। उनको देखा देखी फिर सोवियट्स ने चाइनीज को encouraged here because by then China had become the communist country, and this is how by 1967 all the 5 countries had acquired nuclear weapons, and the reason behind it, among many other reasons, was the Cold War rivalry that was going on. और ये सारी जो अभी तक हमने proliferation discuss की है, this is horizontal nuclear proliferation. Then now you recall the contents of the video that we watched in the beginning of our lecture. आपने देखा होगा कि USSR and USA, they were developing more and more lethal nuclear weapons, each trying to supersede the other, each trying to outrun the other. और वो pure Cold War rivalry थी, और वो थी vertical nuclear proliferation. और आज दुनिया में ये माना जाता है कि जो 14,900 का ग्लोबल न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, इसका 80% जो है, it is collectively possessed by the USA and the Russia, modern day Russia, former day USSR, 80%. So now you know how the Cold War rivalry is responsible for this nuclear proliferation. ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स जो आज के दौर के हैं, इसको अगर समझना है ना, तो आपको 3-4 हिस्टोरिकल इवेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। और उसमें जो सबसे मेजर 2 इवेंट्स हैं वो है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, और उसके बाद फिर आपको गल्फ वॉर का पता होना चाहिए, आपको ऑयल पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, और फिर आपको ये जो 9/11 और पोस्ट 9/11 एरा है इसका पता होना चाहिए, अरब स्प्रिंग का पता होना चाहिए। सो आप दुनिया में जितना क्राइसिस आज देख रहे हैं, whether it's Middle East, whether it's the Asian crisis, whether it's the Afghanistan quagmire, whether it's the terrorism, or whether it's the recent phenomena of the nation states, most of it find its roots in the World War I and World War II, and then of course the events that followed these 2 wars. And then जो मॉडर्न आपको इवेंट्स पता होने चाहिए, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपकी 9/11 है, पोस्ट 9/11 वॉर ऑन टेरर है, जिसमें अफगानिस्तान और इराक की इन्वेजन है, फिर अरब स्प्रिंग है, अरब स्प्रिंग के साथ आपका जो पोस्ट अरब स्प्रिंग वेस्ट इंटरवेंशन है सीरियन क्राइसिस में और इराक में और यमन में फॉर दैट मैटर। तो आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग होनी। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की, तो सारा का सारा क्राइसिस बेस ही कर रहा है वर्ल्ड वॉर 1 और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर, यूएस मैंडेट के ऊपर, स्काई स्पीक आउट एग्रीमेंट के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट्स बड़े जरूरी हैं, हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। कंसिडरिंग कि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, आई विश कि मैं सारी बातें आपको बता सकता हूँ, ऑल्दो कि ये हमारे टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, बट as a thesis aspirant, I cannot encourage you enough, or I cannot insist enough for you to have a good understanding of these issues. ठीक है? And only then you'll be able to put things in perspective. आपकी holistic understanding develop ही था वो। ठीक है जी? एमन, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका जवाब ये है कि देखिए, ये डायनामिक्स होती है ना, वो इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स एनिमी इज अ फ्रेंड। ठीक है, तो ये होता है। फिर इसमें आपकी इंटरेस्ट आ जाते हैं, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे इंटरेस्ट अलाइन कर जाते हैं वहां पे स्टेट्स एक दूसरे को असिस्ट करती हैं, कभी कभी मजबूरी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज प्लेड आउट। अच्छा, मैं बात कर रहा था
और जरूरी नहीं कि आप उसके ऊपर किताबें पढ़ें. देखिए, you can have any source, but as long as it's an authentic source, you can go along with it. एक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वैसे मतलब जरूरी नहीं है कि आप बुक्स ही पढ़ें तो आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग होगी. कभी कभी इंफोटेनमेंट भी आपको बड़ा हेल्प करती है, यू नो, इंफॉर्मेशन थ्रू एंटरटेनमेंट. सो देयर इज वन documentary. It's not a documentary actually, it is a movie, a very good movie though, and it's one of my favorites. I would want you, if you want to have a good understanding of these events, मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे तो वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है. और फिर आई स्पेंट सम टाइम इन द वेस्ट, तो आई बीन टू दीज प्लेसेस एज वेल, और आई वेंट टू दीज प्लेसेस sheerly out of my interest. So the most fascinating modern history that I find is the World War II. तो उसके ऊपर एक बड़ी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है. डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट्स बेसिकली ये सीरीज है पूरी, 10 सीजन्स की, इसको कहते हैं बैंड ऑफ ब्रदर्स. और ये सिनेमाटोग्राफिकली इसकी हाईएस्ट रेटिंग्स हैं दुनिया में IMDb पे के ऊपर. इससे बेहतर सिनेमाटोग्राफिक एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा. अगर आप 55 इंचेस की स्क्रीन पे इसको लगा के देखते हैं 4K रेजोल्यूशन के साथ, तो आपको लगेगा कि आप वर्ल्ड वॉर 2 बकायदा खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं. बट इट्स अ गुड हिस्टोरिकल फिक्शन. ठीक है, डू वॉच इट. ठीक है, अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं फॉर 5 मिनट्स, और फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेग को टच करेंगे अपने इस लेक्चर की, और वो है कि हाउ पाकिस्तान and India came to acquire nuclear weapons. Do you guys need a 5 minutes break, or shall we carry on? Okay, let's just go on a break then. Okay, or so let's resume the class. अब हम एक लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे which is actually very interesting, और वो है कि how Pakistan and India came to acquire nuclear weapons. इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इस डिबेट का पता होना बड़ा जरूरी है कि ये डिबेट है क्या. तो अभी रिसेंट इयर्स में ये एक डिबेट इंटरनेशनली भी हो रही है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है. सम लॉबी जो है यहाँ पे भी की जा रही है, और वो डिबेट ये है कि पाकिस्तान ने जो ये न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए हैं, perhaps we shouldn't have acquired these nuclear weapons, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हमें ये सूट नहीं करता कि हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उससे न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने पे लगाएं. और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो वेपन्स हमने एक्वायर किए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, ये अगर हमने ना किए होते तो शायद पाकिस्तान जो है वो इतना अंडर डेवलप्ड ना होता. तो we'll try to objectively analyze कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हमने बनाए हैं, were they need of the hour? Are they still need of the hour? What were the factors which contribute to these nuclear weapons? ठीक है, और क्या ये वाकई ही inevitable था पाकिस्तान के लिए? Was it a pragmatic decision on the part of the leadership of that time कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएं, जिसमें इनिशियली ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आ जाते हैं, फिर आपके जनरल ज़ियाउल हक साहब आ जाते हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं, और बेनज़ीर भुट्टो भी आती हैं, क्योंकि ये सब उसी एरा में हुआ. और आज ये कोशिश भी की जा रही है हाइब्रिड वॉरफेयर को अगर आप समझें, पार्ट ऑफ दैट हाइब्रिड वॉरफेयर व्हिच इज बेस्ड ऑन पाकिस्तान अगेंस्ट बाय इंडिया, उसका पार्ट एक ये भी है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको अंडरमाइन किया जाए, न्यूक्लियर सिक्योरिटी को अंडरमाइन किया जाए, और किसी ना तरह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है इसको इट शुड बी प्लेस्ड अंडर the protection of international regime rather than the Pakistan establishment. तो इस डिबेट को हम देखेंगे, बट हम इसको बड़ा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे कि वो कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया इस डिसीजन को लेने पे, और क्या ये वाकई बात ठीक है कि हम बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाना सूट नहीं करता. क्योंकि देखिए दुनिया में इस वक्त 207 कंट्रीज हैं और सिर्फ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है. इसका मतलब ये कि कोई
98 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया तो वो भी सरवाइव कर रही हैं। तो क्या हम उन 198 स्टेट्स में से नहीं हो सकते थे कि जिन्हें न्यूक्लियर वेपन के बगैर भी सरवाइव करना चाहिए था? तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? डिबेट आपको समझ में आ गई? ऑलराइट, तो हम जरा पहले हिस्ट्री में चलते हैं, जो कि कुछ आपको भी पता है कि 1998 में जब इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए तो पाकिस्तान यौम तकबीर के नाम से। लेकिन ये तो लीनियर हिस्ट्री है ना, ये शुरू कहाँ से हुआ और इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया? और कोल्ड वॉर राइवलरी भी चल रही थी। तो फिर उसी दौर में ये एफर्ट्स भी शुरू हुई कि इसको रोका जाए, जिसको हम नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स कहते हैं, कि प्रोलिफरेशन को रोका जाए, क्योंकि डर ये था कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो soon every other country will have a nuclear weapon, and the more the countries nuclearization के founders हैं जिनकी वजह से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, they came up with a plan. अब वो डंडे के जोर पे तो रोक नहीं सकते थे, सो उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी निकाली, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने ये प्लान इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम था एटम्स फॉर पीस। ये एटम्स फॉर पीस क्या था? ये अमेरिकन्स कि जी जो कंट्रीज इस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम को साइन अप करेंगी, दे बिकम द सिग्नेटरीज ऑफ दिस प्रोग्राम, उनको हम खुद फैसिलिटेट करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। बट इसकी जो कैच था, या जो इसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच थी, वो ये थी सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आप उसे वेपन ग्रेड पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। और पाकिस्तान और इंडिया जो थे, दे बोथ बिकेम द सिग्नेटरीज ऑफ दिस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम। ठीक है, and eventually they both were facilitated in terms of initial nuclear systems, in terms of fissile materials and so on and so forth. Now, Pakistan remained adherent to the commitment it had made under Atoms for Peace program, which means we initially were only developing a nuclear technology aimed at civilian nuclear purposes. इसमें generation आ जाता है, oncology आ जाता है, irrigation आ जाता है, so on so. But Indians, as Indians have always been, they secretly started using the same equipment, same technology, and same facilitation for a covert operation of developing a nuclear weapon. And in 1972, they conducted the first ever nuclear test. The name of that bomb was the Smiling Buddha. So ये जो 1972 का nuclear test इंडिया ने conduct किया, that was a watershed event for Pakistan. And that was a turning point as far as our nuclear weapon program is concerned, because that's where we clearly decided that now we are also going to develop a nuclear bomb. लेकिन ये in itself explain नहीं करता कि इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो हमने भी बना लिया, तो इसका मतलब ये तो कि हमने प्योरली इंडियन राइवलरी में बनाया, और ये तो फिर उस डिबेट को जस्टिफाई करता है कि वाकई हमें न्यूक्लियर वेपन ही बनाना चाहिए था, because we can't afford it. And that's true, we can't afford it. As a country, as a state, as a society, considering our economic profile, considering our social profile, considering our resources, considering how we are economically dependent on the international monetary institutions, तो हमें तो सूट ही नहीं करता कि हम एक इतना बड़ा एडवेंचर करें, इतने बड़ा अपनी रिसोर्सेज को डाइवर्ट करें और न्यूक्लियर वेपन बनाएं। तो अब हम क्या करें? तो ये स्माइलिंग बुद्धा वाला इवेंट एक्सप्लेन नहीं करता।
फिर इसके लिए हमें हिस्ट्री में फर्दर पीछे जाना पड़ेगा, एंड इट स्टार्ट्स विद 1947. तो मैं आपके सामने वो फैक्टर्स पहले लिख देता हूँ, फिर इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, नोट्स में भी दिए हुए हैं, तो आपने वही पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बाकी नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है. तो 1947 से इसको जरा हम ट्रेस करते हैं कि वो कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने हमारी इस थिंकिंग को शेप किया. अच्छा, पहले एक चीज नोट करके लिख लीजिए कि जब ये द स्माइलिंग बुद्धा का टेस्ट इंडियंस ने कंडक्ट किया तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी दो अप्रीहेंशंस रखी, और हम पहले भी 1972 से पहले भी ये बात कर रहे थे. वो दो अप्रीहेंशंस क्या थी? हमने एक तो ये कहा कि इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट जो किया है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, ये इन्होंने हमारे लिए बनाया है. दे वांट टू कीप पाकिस्तान अंडर चेक, दे वांट टू कीप पाकिस्तान a weak and a fragile state. इंडिया ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी बात नहीं सुनी, जो कि हमेशा से होता है और अभी भी हो रहा है. दूसरी हमारी अप्रीहेंशन ये थी कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रियलाइज कराने की कोशिश की कि इंडिया इज ट्राइंग टू बी अ रीजनल हेजेमॉन. हेजेमॉन क्या होता है? ये एक टर्म है जो हम यूज करते हैं उन सारी स्टेट्स के लिए जो कि डोमिनेंस चाह रही होती. तो हमने कहा जी इंडिया इज ट्राइंग टू बी अ रीजनल हेजेमॉन, व्हिच मींस इंडिया वाज सीकिंग dominance on the region of South Asia, and for that very purpose it had developed this nuclear bomb. तो हमारी दो apprehensions थी, ये नोट कर लें जरा, जो हमने उस वक्त भी कन्वे की, उससे पहले भी हम कन्वे कर रहे थे, और उस वक्त उन apprehensions को सीरियसली नहीं लिया गया. अभी हम आगे चल के देखेंगे कि अब वो अप्रीहेंशन हमारी बाद में सही साबित हुई या नहीं. तो नंबर वन was कि हमने कहा कि इंडिया has developed this nuclear weapons to undermine Pakistan and its security because India wants to keep Pakistan a weak and a fragile state. We said that, or we expressed this apprehension that India was trying to be a regional hegemon. That too was outrightly rejected both by the Indians and the world community. ये समझ में आ गई बात आपको? दो apprehensions वाली. Okay, so now I'm going to write down the factors. पहले हम historical factors को देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं. दूसरा हमारा इसमें फैक्टर आता है जी, ये जरा मुझे लिख लेने दें. ये चार फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया. तो हम जब हमने ये डिसीजन लिया, वो मैंने आपको बता दिया कि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बनता है 1972 जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया. तो उससे पहले जो हिस्ट्री है उसको हम एनालाइज करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फैक्टर, एंड दैट इज 1947 द शैडो ऑफ पार्टीशन. ये शैडो ऑफ पार्टीशन मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब हम पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम मिस कर देते हैं और बहुत सारे टीचर्स भी एक्सप्लेन नहीं करते, वो ये है कि इसमें 47 का बहुत बड़ा रोल है जिसने हमारी इस बायलैटरल रिलेशनशिप की नेचर को शेप अप किया है, और वो शेडो आज भी लिंगर कर रहा है और वो हमारे इस रिलेशनशिप को अभी भी डिटरमिन कर रहा है. तो 1947 में क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था, आप सबको पता है, लेकिन शायद आपको कुछ लोगों को ना पता हो कि पार्टीशन जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूट किया गया वो था 3 जून का प्लान, पार्टीशन प्लान. सो एक्चुअल पार्टीशन प्लान ये एनविसाज कर रहा था कि पार्टीशन विल टेक प्लेस इन 1948, नॉट इन 1947. बट 3 जून को पार्टीशन प्लान अनाउंस होता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ जाता है और 15 को फिर इंडिया बन जाता है. तो हम कह सकते हैं कि विद इन अ मेयर स्पैन ऑफ 3 months इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, जल्दी में किया गया, इल थॉट प्रोसेस था. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2 चीजें हुई. जो ये पार्टीशन इस तरह से हर्डली ब्रिटिशर्स ने एग्जीक्यूट किया और इल थॉट वे से किया, उसके 2 रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं. नंबर 1, mass migration, जिसको हम exodus कहते हैं. Millions of people migrated on both sides of the border. And secondly,
that migration was followed by communal violence. When we say communal violence means के ये तीन communities जो थी, the Hindus, the Sikhs and the Muslims, who had been living or which had been peacefully coexisting for hundreds of years, all of a sudden turned violent towards one another. Objectively speaking, अलमिया ये है कि इंडिया में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों ने ये किया और हमें ये बताया जाता है कि हिंदुओं ने ये किया, whereas it was done by both the sides, but दोनों responsible नहीं हैं. Responsible हैं the British and the way they shamelessly executed this partition plan. तो ये सबसे पहला फैक्टर है. अब उस पार्टीशन में जो हुआ, मैं आपके सामने दो वाकयात रखता हूँ जो कि मैंने देखे हैं, देखे तो नहीं सुने, बट फर्स्ट हैंड अकाउंट. तो कोविड से पहले आई वाज इन अमेरिका ऑन अ ट्रेनिंग, तो वहाँ पे मैं जेफरसोनियन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में था, तो आई वाज विजिटिंग जेफरसोनियन मेमोरियल. डीसी में इज फेमस फॉर these historical monuments and they have amazing museums. DC वैसे तो बहुत छोटा सा टेरिटरी है, बट उसके अंदर म्यूजियम बहुत सारे. एनीवेज, तो वहाँ पे आई मेट दिस Sikh. He was from India. So we started talking, and then when he learned that I'm from Pakistan, initially he approached me thinking that I'm an Indian. So I told him that I'm from Pakistan. तो उसने कहा पाकिस्तान के किस पार्ट से हैं? तो मैंने कहा जी I'm from पंजाब. तो उसने कहा अच्छा मैं भी पंजाब से हूँ, और हमारी फैमिली ने 1947 में पाकिस्तानी पंजाब से माइग्रेट किया था इंडिया, और चकवाल में उनका कहीं गांव था. आप मोटरवे पे अगर ट्रैवल करें तो आपको चकवाल का बोर्ड भी नजर आता है. इट्स क्लोज टू पिंडी. So all of a sudden he burst into tears and he started crying, and then he said यार तुम लोग बहुत जालिम हो. तो मुझे इनिशियली लगा कि यार he is just giving out this rhetoric of Indians, जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि पाकिस्तानी बड़े जालिम. But then he shared his story with me. तो उसने मुझे बताया कि पार्टीशन से पहले उनका चकवाल में गांव था, and he was a very well off family back then. तो जब पार्टीशन प्लान अनाउंस हुआ तो उन्होंने कहा जी हम तो इनिशियली वी नेवर प्लान कि हमने पाकिस्तान जाना है, सॉरी इंडिया जाना है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन आवर विलेज came under attack by the Muslim mobs. और वो हर रोज आते थे और वो हमारे सिखों के जो उसमें घर थे उनको जला देते थे और लड़कियों का रेप करते थे और लूटते थे और मारते थे. Then his family eventually decided that they will migrate to the Indian side of Punjab. तो उसने कहा जिस दिन हमने माइग्रेट करना था उससे एक दिन पहले रात को हमारा जो गांव था उस पर दोबारा मुसलमानों ने हमला किया, और वो मुझे लोगों ने बताया कि वो हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, हमारी हवेली की तरफ आ रहे हैं. उसने कहा जी मेरी 3 बहनें थी और मुझे ये पता था कि अगर ये मुस्लिम मॉब मेरे घर में दाखिल हो गया तो वो इन तीनों के साथ वही करेगा जो पहली जो सिखों के घर में उनके साथ किया गया था. तो उसने आउट ऑफ फियर उन तीनों बहनों को अपनी जो उनकी हवेली का वेल था उसमें जिंदा छलांग लगा के उन्हें मार दिया. अभी मैं आपको बता रहा हूँ और मेरी आई एम हैविंग गूज़बम्प्स. तो अब वो नेक्स्ट डे इस हालत में उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया की तरफ माइग्रेट किया. I grew up and I come from a family which also migrated from India to Pakistan during the partition. So I've grown up listening to these stories from my dadi ammi and all. तो मैं बताती थी कि कैसे जब उनकी ट्रेन आ रही थी यूपी से लाहौर, एंड सिंस माय दादा वाज इन रॉयल आर्मी तो उनकी जो कंपार्टमेंट था इट वाज हेवीली गार्डेड बाय द ब्रिटिश आर्मी, बट देयर ट्रेन केम अंडर अटैक ऑन 7 डिफरेंट ओकेजन्स. तो उन्होंने बताया कि किस तरह से मुसलमानों को रास्ते में रोक के मारा गया हिंदुओं ने और सिखों ने. तो उनके एक छोटे भाई थे उस वक्त जो अपने साथ लेके आ रही थी, तो somehow luckily they survived because partially because कि उनका जो कैबिन था वो अंडर प्रोटेक्शन था, बट इस फियर से कि कहीं आगे अटैक हो, और वो छोटे थे उनके जो भाई थे, सो
तो कहीं उनको ना मार दें, तो उन्होंने क्या किया कि जो लाशें थी उसके नीचे उनको छुपा दिया डर के मारे। जब वो लाहौर पहुंची तो उनके जो छोटे भाई थे, he had died out of suffocation for being buried, or sorry, for being hidden under the pile of those dead bodies. Now, imagine millions of people migrating on both sides of the borders, having these tales of horrors to share with the people of that land and with the generations to come afterwards. इसने किया क्या है? इस bitter experience ने हमारे दरमियान में इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो ये seeds हैं, they were sowed in this bitter partition, ठीक है? और वो आज भी rivalry चल रही है और वो hate exist करता है, ठीक है? और इसके ऊपर बड़ी एक अमेजिंग किताब है जो स्टेनले वॉलबर्ट ने लिखी है, उसका नाम है शेमफुल फ्लाइट। और उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जाते जाते अमंग मेनी अदर थिंग्स जो एक लेगेसी छोड़ी हम दो कंट्रीज के लिए, वो ये राइवलरी थी, वो ये हेट था, वो ये बिटरनेस है, वो ये एक्रिमनी है जो दो कौमों के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो उसकी वजह थी दिस hurried implementation or perhaps execution of this partition plan and the ensuing mass migration and the communal violence, ठीक है? तो ये तो पहला फैक्टर है, और यही वो फैक्टर है जो हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप को शेप अप किया जिसने ओवर द कोर्स ऑफ दीस 75 years। यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को एज ए कॉम लार्जली ट्रस्ट नहीं करते, हेट एग्जिस्ट करता है। तो ये हेट उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था। दूसरा फैक्टर है इंडियन हेजेमनी, डोमिनेंस। ये इंडिया का जो डोमिनेंस का थीम है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इट हैज बीन देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनके बयानात सुन लें। तो जवाहरलाल नेहरू who was the first prime minister of India and he is a celebrated founding father of India, one of the founding fathers of India। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि इंडिया must perish or dominate, perish it won't, so dominate it must। तो ये जो अखंड भारत की जो आइडियोलॉजी है इंडिया की शुरू से एग्जिस्ट करती है, और वो डोमिनेट करना चाहता था इस रीजन को, आज भी चाहता है। अब अगर आप साउथ एशिया का मैप देखिए तो वहां पे आपको ये नजर आएगा कि इंडिया के बाद अगर कोई कंट्री सिग्निफिकेंट है आज भी, और उस वक्त तो खैर ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे पार्ट था, तो पाकिस्तान काफी बड़ा था, वो पाकिस्तान था। तो इंडियंस को पता था कि जिनका ये ड्रीम है डोमिनेंस का, इसको अगर कोई चैलेंज कर सकता है, इफ देयर इज अ कंट्री व्हिच कैन स्टैंड अप टू देम, इट्स पाकिस्तान। सो पहले दिन से उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को वीक रखा जाए। पार्ट ऑफ द रीजन इज बिकॉज दे वांटेड टू डोमिनेट। तो आप किसी रीजन पे तभी डोमिनेट कर सकते हैं ना जब आपकी मोनोपोली हो, जब आपके मुकाबले पे कोई ना हो, जब when you become an undeclared winner of that competition। And the only way they could do it is by keeping Pakistan a fragile country, a weak country, a country that was subservient to India। और वो उन्होंने इसलिए फिर आपको ये सारी बाकी चीजें नजर आती हैं, which is a third factor, the history of conflict। तो फिर इंडियन हेजेमनी की वजह से इंडिया ने हमारे रिसोर्सेज रोके, हमारी टेरिटरीज पे कब्जा किया, पानी के मसले खड़े हुए। और जब इतने सारे इश्यूज होते हैं तो फिर जंगें तो होती हैं। तो फिर 1971 तक 72 तक हमारी एक बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री थी कन्फ्लिक्ट्स की, जिसमें टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हैदराबाद है, जूनागढ़ है, रन ऑफ कच्छ है, और फिर ऑफ कोर्स कश्मीर है, जिस सब को इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया। इंडिया ने हमारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको तबाह किया, हमें नहीं दिया, हमारे मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं दिए, हमारे बाकी रिसोर्सेज नहीं दिए, और इन सब कन्फ्लिक्ट्स की वजह से वॉर्स हुई। सो बाय 1972 वी ऑलरेडी हैड फॉट 3 मेजर वॉर्स,
जिसमें 1948 है, 1965 है और फिर 1971 है। तो जब आपकी इतनी जंगें होंगी तो आप में ट्रस्ट डेफिसिट मजीद बढ़ जाएगा, आप में एनिमोसिटी मजीद बढ़ जाएगी और आप एक दूसरे पे और शक की निगाह से देखेंगे। और लास्ट जो फैक्टर मैंने लिखा है वो 1971 का फॉल ऑफ ढाका है। फॉल ऑफ ढाका जो है बेसिकली, ये मैं अलग से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमने 3 लेसन्स लर्न किए। तो फॉल ऑफ ढाका आप सबको पता है कि क्या हुआ था। ऑब्वियसली उसमें हमारा एक बहुत बड़ा रोल है एज ए नेशन। हमने जो ईस्ट पाकिस्तानीज के साथ किया उसका एंड यही होना था, लेकिन हमारी गलतियां अपनी जगह पे, उसमें इंडिया का एक बड़ा प्रिकेरियस रोल है जो आपको समझना है आज। तो इंडिया ने क्या किया कि जब ईस्ट पाकिस्तान में सेपरेटिज्म की मूवमेंट शुरू हुई तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड की, लेजिटिमेसी प्रोवाइड की। फिर इंडिया ने जो उनके आर्म्ड विंग्स बनवाए, मुक्ति बानी जिसका नाम है, उसको उन्होंने सीक्रेटली वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी, एंड व्हेन दे टर्न्ड their guns towards the institutions, the state of Pakistan, तो फिर इवेंचुअली पाकिस्तान को, आर्मी को एक ऑपरेशन वहां करना पड़ा। और जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो इंडिया ने हमारी सप्लाई लाइंस कट ऑफ कर दी, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, मॉडर्न डे बांग्लादेश और फॉर्मर डे ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान में आप देखेंगे कि इंडियन टेरिटरी, तो हमारी जो भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी वो थ्रू इट यूज्ड टू रन थ्रू द इंडियन लैंड। इंडिया ने हमारी सप्लाई लाइंस कट ऑफ कर दी। जब सप्लाई लाइंस कट ऑफ हो गई, आपकी रीइंफोर्समेंट्स आर्मी को नहीं जा रही थी, तो इवेंचुअली एज एनी अदर आर्मी वुड, पाकिस्तान आर्मी स्टार्टेड गेटिंग वीक। और जब वो वीक हो गई तो फिर इंडिया ने अपने ट्रूप्स उतारे इनसाइड ईस्ट पाकिस्तान ऑफ दैट डे, which is a direct violation of the sovereignty of Pakistan state, which is a direct violation of the international norms, which is a direct violation of the UN Charter. Or those troops, they started fighting side by side Muktibani. Eventually, we lost because we just not only lost the war, we lost half of our territory, more than half of our population. 95,000 of Pakistani troops were taken as prisoners of war. General Niazi, who was leading the operation, had to sign instrument of surrender in front of Indian troops. वो आज भी YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी नेशनल ट्रेजेडी जब हमने देखी तो हमने 3 लेसन्स लर्न किए। वो जरा जल्दी से नोट कर लें, 3 लेसन्स क्या। पहला लेसन हमने ये लर्न किया कि जो इंडियन प्लॉट्स हैं, स्कीम है, एग्रेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। इंडिया विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू jeopardize Pakistan as a state and to undermine its security. B, मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया ने हमारी सप्लाई लाइंस कट ऑफ कर दी। तो जब इंडिया ने हमारी सप्लाई लाइंस कट ऑफ की तो हम एक और इंटरनेशनल अलायंस का पार्ट थे, और वो थी सीटो एंड सेंटो, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था और तब तक हम अमेरिकन कैंप को ज्वाइन कर चुके हुए थे। ये सीटो और सेंटो जो है ये दोनों मिलिट्री अलायंसेस, और सीटो और सेंटो ये कहती थी उस वक्त अगर आप इसका सिग्नेटरी हैं और आप पे कोई और कंट्री अटैक करेगी तो अमेरिका विल कम टू द एड ऑफ दैट कंट्री, वो हमारी मदद के लिए आएगा। तो जब इंडिया ने हमारी सप्लाई लाइंस कट ऑफ की तो हमने अमेरिकन को अप्रोच किया और हमने उन्हें कहा कि भाई देखें ये कर रहे हैं और आए और हमें बचाएं। Guess what? Americans didn't come to our help. उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो हमने रशिया के कॉन्टेक्स्ट में की थी साइन, इंडिया वाला मामला हम नहीं देख सकते। तो उससे हमने लेसन ये लर्न किया कि इट्स अ सेल्फ हेल्प सिस्टम। अगर हमें अपनी सिक्योरिटी करनी है तो खुद करनी है। इवन अ सुपर पावर इज नॉट गोइंग टू कम टू आवर एड। तीसरा लेसन हमने लर्न किया कि हम इंडिया को कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं हरा सकते।
particularly after हम naturally conventional warfare उनसे नहीं जीत सकते. तो ये 3 lessons हमने learn किए. A, कि Indian aggression is not going anywhere. We have to find a permanent solution to it. That solution has to be indigenous, means we have to find it on our own. We cannot expect nor hope for an international support, nor we can rely on such alliances to protect us against Indian aggression. C, that solution had to be a non-conventional one. आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं. ये जो लास्ट टॉपिक था थोड़ा सा रह गया है. We'll cover it up in the next lecture, क्योंकि मैं डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा हूँ. लेकिन ये हमने 4 फैक्टर्स देख लिए. उसके बाद थोड़ी सी 2-3 एक वाकयात हैं और वो अप्रीहेंशन वाला पार्ट रह गया. We'll discuss it in the next class. I hope कि आपको लेक्चर कुछ प्रोडक्टिविटी मिली होगी. I'm going to share my number with you. आप इस पे मुझे ऐड कर लीजिए if you have a group or something. If not, create a group. इसका फायदा ये होगा कि मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा. B, you can use the same for post lecture queries or anything. ठीक है. But I just have one request. मेरी जो जॉब नेचर है वो बहुत बुरी है. इन्वेस्टिगेशन में होना बहुत मुश्किल काम है. तो प्लीज अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, I don't mind, but drop a message before making a call. At times it's difficult for me to attend the call. But ये नंबर आप अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए. अगर नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए और फिर मुझे ऐड कर लीजिए और बाकियों को भी ऐड कर लीजिए. I'll share the notes there. Also do let me know about your feedback about the class. ठीक है जी. With that, let's call it a day. See you in the next